it is a mid-oceanic ridge. Before we going for that discussion, we just say to that about mid-oceanic ridge. A mid-oceanic ridge is a seafloor mountain system formed by the plate tectonics. It is typically has a depth of 20,600 meter and it is about 2 kilometer above deepest bed, okay, of the ocean basin. This features is there after seafloor spreading take place along the divergent plate boundary. So basically the mid-oceanic ridge is a seafloor mountain system, okay, formed by the plate tectonic movements. So that is typically has a depth. इसकी डेप्थ आपके पास कितनी है? द डेप्थ इज 2600 मीटर एंड राइज अबाउट 2 किलोमीटर, और जो ये निकला हुआ है दैट्स 2 किलोमीटर इज राइजिंग अबव द डीपेस्ट पार्ट. जितना भी डीपेस्ट पार्ट है उससे 2 किलोमीटर ये राइज अप है. और देन भी डेप्थ जो इसका है दैट्स 2600 मीटर. ओशन बेसिन, दिस इज द फीचर्स देयर सी फ्लोर स्प्रेडिंग टेक प्लेस एट divergent plate boundary. So divergent plate boundary, it is a main feature of that mid-oceanic ridge forming. Divergent means two plates are back side, opposite side moved to each other. Okay, so now we discuss to learn that parts that means the oceanic ridges, the continuous submarine mountain chain standing approximately 80,000 किलोमीटर थ्रू ऑल द वर्ल्ड ओशियंस. तो जितना भी आपके वर्ल्ड ओशियंस है उसमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने ओशियंस है उसमें करीब 80,000 किलोमीटर आपका जो भी है सबमरीन माउंटेन सिस्टम का चेन एक्सटेंड करता है. द इंडिविजुअली oceans ridges are the largest features in ocean depth. Okay, या बेनेथ हम कहते हैं जिसको कि ओशन बेनेथ हम कह रहे हैं. दैट इंडिविजुअली ओशन रिज इट इज अ लार्जेस्ट फीचर्स. तो ये लार्ज ओशन बेसिन का एक लार्जेस्ट बेनेथ है, कह सकते हो लार्जेस्ट फीचर कह सकते हो उसको. कलेक्टिवली अगर हम बात करें, अगर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं दैट्स ओशन बेनेथ का या ओशन रिज का सबसे इंपॉर्टेंट या लार्जेस्ट फीचर्स है. बट अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं दैट्स कलेक्टिवली द ओशन रिज सिस्टम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर. Okay, अगर हम कलेक्टिव बोल रहे हैं दैट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द लार्जेस्ट सरफेस. अगर हम फीचर्स की बात करते हैं दैट इंडिविजुअली इज द लार्जेस्ट फीचर ऑफ ओशन स्पीशीज. Okay, so now we discuss to one by one about the ocean floor spreading, also called sea floor spreading, only discussed. So now we discuss the mid-oceanic ridge. In screen you can see the mid-oceanic ridge on the surface. It sounds obvious, but these might be, but there are complicated forces that create them. Okay, तो complicated forces होते हैं जो इसको एक तरीके से create कर रहे हैं. Then here you will learn about mid-oceanic ridges are, where they are, how they are created, and what makes them fascinating geological formation. अब हम आइए देखेंगे इसमें कि आपके किस तरीके से बने हैं, ये है क्या, और किस तरीके से इसकी fascinating geological formation होती है. So अगर हम बात करते हैं आपका डेफिनेशन, अगर हम कहते हैं कि क्या है बेसिकली, दैट्स अ पीपल हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाट लर्किंग बिलो द वाटर. हम देखने के लिए हम उत्साहित रहते हैं कि क्या है पानी के अंदर, क्या चीज होगी. तो मूवीज have played on our fears and lack of knowledge. Creature from Black Lagoon, Penta, Java, your name. It is also there the particular creepiness that comes with not knowing what's under there. कैसे पता चला कि कुछ अंदर क्या चीजें हैं, कैसे हम पता लगाएंगे. But in the real life, there is something going on under the ocean that is enormous, that is sometimes instantly hot, and that houses strange creature that lives in total darkness. They are mid-oceanic ridge, which is formed. They are the mid-oceanic ridge, which they are the two tectonic plates. Okay, so हम बात कर रहे हैं they are the particular creepiness that comes with not knowing what under there. But the real life, they are the something going on under the ocean that is enormous, that is sometimes instantly hot. कभी कभार देखते हैं कि हम देखते हैं कि कभी कभार वहां पे गर्म पानी चल रहा है, नहीं hot instantly है. And the houses strange creatures that lives in total darkness. They are mid-oceanic ridge, which form where two tectonic plates are spreading apart. जहां पर आपकी two plates, tectonic plates है, वो spread out हो रही हैं. That's our which is are called sea floor spreading. The tectonic plates are larger pieces of Earth's crust. जिसको हम कहते हैं आपका अर्थ क्रस्ट के larger pieces हम कह सकते हैं tectonic plates हैं, and they interact in a number of ways where they are pulled apart is called divergent. So उस फीचर्स को, उस प्रोसेस को जहां पे कि आपका टू प्लेट्स कंटेंट्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, ऑफ दैट इज कॉल्ड divergent. तो divergent, that is called the divergent plate boundary. अगर हम बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट आपका फिगर देखें इसी में, तो फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है इसका, बेसिकली लोकेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज क्या हो सकती है, लेकिन हम बात करते हैं फॉर्मेशंस की, किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है. देखिए, बिकॉज मिड ओशियनिक रिज आर अ प्लेस वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुलिंग अपार्ट. यानी कि वो ऐसी जगह है जहां पे कि आपकी प्लेट्स क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल आउट कर रही हैं, पुलिंग कर रही है, एक दूसरे से खींच रही हैं. दैट्स यू माइट बी एक्सपेक्ट टू फाइंड incredibly deep canyons. तो वहां पे बनते हैं आपके deep canyons, but that not exactly the case.
as the tectonic plates pull apart, molten rock और magma comes up. अब जैसे वो एक दूसरे को खींचेगा, जो नीचे मेंटल्स में है, यानी कि आपके जो फर्स्ट के बाद सेकंड क्रस्ट के बाद जो मेंटल लेयर है जिसमें कि आपका मैग्मा फ्लोट कर रहा है, वो पर्टिकुलर मैग्मा क्या करेगा, कम्स अप फ्रॉम बिलो द fill in the gaps. In fact, of some time pushes from below first, forming a raised area that are forcing the more solid rock above the crack apart. उस पर्टिकुलर रीजन से आपके सॉलिड रॉक्स जो आएंगे वो अर्थ सरफेस पे, यानी कि उस ओशनिक सरफेस पे राइज्ड अप हो जाएंगे, cracks apart. The new rock that forms from the molten rock usually basalt. तो वो रॉक बेसिकली क्या होंगे, that's the rocks are basalt. The most common types of rock on earth, यानी कि जो आपकी मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रॉक अर्थ में मिलती है. The where हम बात करते हैं, where there are weaker areas in the crust along the mid oceanic ridge, the ridge can divide into a segment. और जहां पे उस पर्टिकुलर मिड ओशियंस का वीकर पार्ट होगा, वहां से वो क्या करती है, that the weaker areas crust along the mid oceanic ridges develop. The ridges can divide into a segment that called fracture zone. जहां वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है या क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, add to the drama there are often some earthquakes and mid oceanic ridges. तो उन पर्टिकुलर कॉल्ड फ्रैक्चर जोन्स में आपके कुछ सम earthquakes भी जनरेट होंगे. मिड ओशनिक रिज हम बात करते हैं, तो मिड ओशनिक रिज आर कैन स्प्रेड स्लोली और क्विकली. ये स्लोली भी हो सकता है और देन क्विकली भी. द स्लो स्प्रेडिंग रिजेस ऑफ्टन क्रैक्स एंड क्रम्बल एंड लीव बिहाइंड रिजेस एंड वैलीज. फास्ट स्प्रेडिंग अगर होता है तो द मिड ओशनिक रिज सीम्स टू स्प्रेड विद मोर फ्लूइडिटी एंड हैव अ स्मूथर लुक. स्लो स्प्रेडिंग एंड फास्ट स्प्रेडिंग आर रिलेटिवली टर्म ऑफ मिड ओशियंस. तो ये मिड ओशियंस पे डिपेंड करता है. स्लोअर टर्म से ये फास्ट, अगर हम स्लो टर्म की बात करें, स्लोली स्प्रेड आउट होते हैं, लीव बिहाइंड रिजेस वैली, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपको वैली मिलता हुआ नजर आएगा. अगर फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ मिड ओशियनिक रिज देखने को मिल रहा है, सीम स्प्रेड टू मोर फ्लूइडिटी, और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइडिटी वहां से निकलेगी, हैव अ स्मूथर लुक, और वो स्मूथर लुक होगा देन स्लो स्प्रेडिंग एंड फास्ट स्प्रेडिंग आर रिलेटिवली टर्म. हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहां पे आपको ये पर्टिकुलर रीजन मिल रहा है, दैट्स अ लोकेशन. क्या इसका लोकेशन है? लोकेशन इज बेसिकली if turns out global mid-oceanic ridges are largest mountain chain on earth. They are went through more than 40,000 miles of ocean floor, making the earth look like it has a series of jeepers. And about 90% of mid-oceanic ridges are under water. तो जितनी भी आपकी 90% mid-oceanic ridges आपको मिल रही हैं, that's under water, but they are the length of through Iceland, that is ocean level. Mid-oceanic ridges are typically half of miles to 6 miles wide and over a mile underwater. Two of the most well-known mid-oceanic ridges are the Mid-Atlantic ridge and the East Pacific rise. Okay, अगर आप हम बात करें, दो रीजन्स की हम बात करते हैं, तो टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन एज mid-oceanic ridges, the Mid-Atlantic ridge and the East Pacific rise. As the might guess, most of the Mid-Atlantic ridge is in the Atlantic and most of the East Pacific rises in the Pacific. तो Atlantic Ocean में हो रहा है कि आपको Pacific Ocean में ये रीजन्स मिलती हैं. Okay, so discuss to this one topic. So mid-oceanic is finished. So we can show it by the diagram mid-oceanic ridges, and also we can frequently yesterday see it. Now we turn to the topic of paleomagnetism. So what is basically the paleomagnetism? Basically, paleomagnetism, it is the process by which we occurs सी फ्लोर स्प्रेडिंग. हम स्टडी कर पाते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है या मिड ओशन है थ्रू द पैलियोमैग्नेटिक करंट थ्योरीज. वो एक एविडेंस है जिससे कि हमें पता चलता है कि सर आपका क्या है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई है और अदर चीजें आपकी ओशन सरफेस में हुई है. तो दैट्स इज डिपेंडिंग ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. द अर्थ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट्स. मैग्नेटिक field due to the self dynamo produced due to the liquid flow in outer core, not caused by a magnetic minerals. It is magnitude at the Earth's surface range from 25 to 65 microteslas. Okay. then बात करते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस along which is अर्थ रोटेट्स कर रही है, उसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ कह रहे हैं. मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ वेयर द कंपास नेडल डायरेक्ट, जहां पे आपके वो कंपास जो हम देखते हैं जिसपे वो कंपास नेडल शो करे, दैट्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. ओके, सो वेयर और जो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ है दैट्स एक्सिस along which is the अर्थ रोटेट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ की, दैट्स मैग्नेटिक नॉर्थ इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ. ओके, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसको हम मैग्नेटिक साउथ कहते हैं कंपास रीडिंग में. दैट सेंस ऑपोजिट अट्रैक्ट टू कंपास नेडल डायरेक्शन इन नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, नाउ you can see the geographical south and study magnetic south, and there the north magnetic poles and here the geographic north pole. Spin axis, you can see the spin axis and geographic north pole is the magnetic south pole. The geographic the north pole that's showing magnetic south pole. Electromagnetic radiations, then belt else radiation belts, magnetic space, magnetic field lines. Okay, so now what is the paleomagnetism? The study of recorded earth magnetic field in rock, sediment or archeological
material. And the study of the recorded of the earth magnetic field in a rock, sediment or archaeological material. So criteria minerals in rock lock in a record of the direction and intensity of the magnetic field when they form. This record provides the information on the past behavior of Earth's magnetic field and the past location of tectonic plates. The recorded of geomagnetic reversals preserved in volcanic and sedimentary rock sequences that's called the magnetostratigraphy provides a time scale that is used in geochronological tools. So paleomagnetism is your tools. It is tools of certain minerals rock lacking recorded कर सकता है direction intensity के through of magnetic field. The record provides information on the past behavior of Earth magnetic field and the record of geomagnetic reversal preserved through the magnetostratigraphy and provides the time scale that's used in geochronological tools. So paleomagnetism is the study of record of the Earth magnetic field in rocks. Okay. अब बात करते हैं it's a pattern of polar wonder past provide the geophysical evidence for continental drift. इसने हमें provide किया that's a geophysical evidence for the continental drift. Marine magnetic anomalies do the same for a seafloor spreading. Same वही process seafloor spreading में जिसको कहते हैं marine magnetic anomalies. Volcanic rocks help in magnetic fossil study too. In the screen is showing a diagram that is the mid-oceanic ridge. You can see here the mid-oceanic ridge. Okay, that the normal magnetic parties partially polarity. You can show it normal magnetic polarity. जितना भी ये darker color है, so okay, that's a darker color and the color it's showing the normal magnetic polarity and the white color is showing the reverse magnetic polarity. Okay, ABC is diagram showing for the your magnetic polarity. So geomagnetic minerals alignment, the magnetic declination and magnetic inclination. The magnetic declination is the angle between magnetic north and mineral north direction on horizontal surface, and magnetic inclination means the vertical angle made by the minerals and surface deep of fossil magnetic. So geomagnetic minerals alignment is showing the different parts of magnetic inclination and declination. Magnetic field lines are parallel near equator and perpendicular at poles. तो आपकी जो magnetic field lines होगी that's parallel near to the equator के equally parallel कह सकते हैं and perpendicular to the poles. अब देख लीजिए that's a fossil magnetic orientation, that's inclination and declination of northern directions. So is also the magnetic equator के आपके equally parallel जा रही है but opposite direction. Equator's line, that's also a diagram, a part of polar wonder. So paleomagnetism topics are finished. So thank you for that. About this one we can discuss to all. So now basically we discussed today is about mid-oceanic ridge. The mid-oceanic ridge is the longest chain of mountain in the world. In 1950 scientists mapped the mid-oceanic ridges using sonar. Sonar is an instrument that use sound waves to measure distance. It bounces sound waves to underwater object and record the echoes of these sound. Then is identified by the mid-oceanic ridges. It is the largest mountain system that is separated out by the divergent forces. Okay, so mid-oceanic and the paleomagnetism is a process or method to study a different rock study, ages of rock, or different processes in the earth crust, earth mantle, the different things. So paleomagnetism is a sonar radiation method to discuss about study to the finding the rocks and their materials about of these one things. So also we can telling to about the paleomagnetism. Paleomagnetism is also a part of geographical or geomagnetic radiation. So study of the recorded of earth magnetic field, okay, by the sediments and archaeological material. So that's a study of the recorded of earth magnetic field. हम earth magnetic field की जो study कर रहे हैं that is called paleomagnetism. और इसके through हम study कर पाते हैं कि हमारे path of mid-oceanic ridges की और आपकी different कह सकते हैं कि different जो भी sea floor splitting references हुए उसकी भी study हम इससे कर रहे हैं. Then the plate tectonic movements के बारे में भी इससे जानकारी मिल पाती है. So that's a paleomagnetism and the mid-oceanic ridge. And tomorrow we discuss about your next topic, that's the final topic of your syllabus, that is plate tectonic movements. Plate tectonic, you know well, that's discuss about the plate tectonic movements. Okay, so if you have any query, then you contact to me and mail me about your queries and questions for regarding for these topics, and we report the topics like your first, second, and the third units all are finished now. So we can discuss one by one again if we have any doubt. So after the completion of these courses, syllabus, then we session for the question sessions and other session you can message in my YouTube channel also. So okay, so we're going for that. So okay, bye, have a nice day. Okay, and stay home, stay safe.